Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing 28th of May's important current affairs. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about Panchayat Advancement Index 2.0 portal. Portal means a website that has been launched to empower the grassroots governance levels. Then we will be talking about a Niti Aayog report that has been recently released and Bharat forecast system, that is the world's first weather model that will offer 6-kilometer resolution. That means in a radius of 6 kilometer here, right, you will be provided with better forecast system, and it has been launched by Bharat, that is your Bharat forecast system. We will be discussing it in detail. Then we will be talking about EPFO. It has retained 8.25% interest rate on employees provident fund for FY25. All these news and many more will be discussed in this video, students, so stay tuned with us till the end. If you are new to our channel, students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. First is Ministry of Panchayati Raj has launched the Panchayat Advancement Index 2.0 portal that will empower the grassroots governance. First of all, this Panchayat Advancement Index, what it is talking about, what is this assessment basically? It is tracking more than 2.5 lakh gram panchayats, right, across 9 themes. That includes your sustainable development goals, right? What are the governance parameters that are being followed here? What are the framework that are being implemented? If we are seeing any growth in or not, then the infrastructure, how is the economy there, right? What are the levels of power individual persons hold? All these things are discussed here, right? So this is the second 2.0 portal that has been recently launched, right? Also remember, in this 2.0 index, the number of indicators has been reduced drastically. In 1.0 portal, there were 506 indicators, which has been now narrowed down to 147 indicators in the 2.0 portal. Correct? Take a note of this. Then next, this is your, and it is Ministry of Panchayati Raj that has launched this Panchayat Advancement Index 2.0. So question can be asked that who launched this? It was launched by it, right? Next is, here you can see, this is a multi-dimensional assessment framework developed by the Ministry of Panchayati Raj to enable the performance tracking of 2.5 lakh gram panchayat across 9 themes. Moving on to Niti Aayog, right? They have recently released a report on designing a policy for medium enterprises, right? This was recently launched by the Vice Chairman of Niti Aayog, Suman K. Berry. Correct? This is a framework, or we can say this is a roadmap that will transform the medium enterprise, right? What will be their future growth engines for medium enterprises? What will be their growth engines that we will be seeing in the future, right? That how we can fully utilize the potentials of these medium enterprise, right? How can we fully unlock their potential? So work will be done on them, correct? Take a note of this. Also, if we talk about this, here you can see the MSME sector, it contributed 29% to the India's GDP and accounts for 40% of the exports, whereas it employs 60% of the workforce. And this is one of the main reasons that we are also seeing that the government is promoting the MSMEs, because we want to generate employment. And one of the criteria, or one of the location where we can see a high generation of the employment, is through MSMEs, because we are developing various services, we are developing various products, right, that can be useful for generating more and more employment. Correct? Here you can see, in this only, despite the critical role, the composition of the sector, here you can see 70% of the registered MSMEs are micro enterprise, 7% are small, and 0.3% are medium enterprise. Also, but 0.3% of the medium enterprise, they contribute nearly 40% of the MSME exports. What does this signify is that only a small portion of the MSMEs, right, they are
doing good, right? They are doing exceptionally good, so rest should also be promoted along with them, right? This number suggests that 0.3% of these medium enterprise, they are contributing to almost 40% of the MSME exports. Moving on, next is government has launched Bharat Forecast System, that is the world's first weather model that will offer 6 kilometer resolution. What does this mean is, first of all, first take a note of this. This is the Bharat Forecast System, right? And as you can see in the picture, Dr. Union Minister Jitendra Singh of Union Minister of Earth Science, he has unveiled this Bharat Forecast System. So in another ways, the question can be asked, name the ministry by which this Bharat Forecast System was launched. It was launched by the Ministry of Earth Science, right? And in a radius of 6 kilometer, this unit will be beneficial, right? As it will be providing us with the data about weather, or we can say weather forecasting will be done here. And the radius in which it will be able to predict accurately will be 6 kilometer. So this is your Bharat Forecast System. This will be helping various farmers in that area, right? Even the infrastructure development sometimes gets impacted because of the weather related events. Sometimes it's pollution in specifically in the north region of India, or sometimes it is weather related activities because of which the projects gets delayed to a very large extent. So in those cases it will be beneficial. So we will be able to plan ahead all those construction, all those plans. Next is EPFO. EPFO has retained 8.25% interest rate on EPF for FY25. What is EPFO? Employees Provident Fund Organization, right? So they have retained, or we can say for example, there is an employee, and each employee, or he is a employee with a registered company, and the company provides provident fund, and the from here the employee will also be contributing in this, as well as the company will be also contributing in this provident fund, and you can withdraw them. You have a UAN number here, right? That is given to you. That will be a unique number for your PF account. You can withdraw that amount as per your wish, right? So on this amount that is accumulated, the government provides 8.5% interest rate, right, that you will be getting for storing this amount in the account, correct? So EPFO has retained 8.25% interest rate on the employees provident fund for the year FY25. See, this EPFO, this is a statutory body, and this comes under which ministry? This question can also be asked. It is Ministry of Labor and Employment, correct? Next is 38th edition of the CSE meeting recommended 36% hike in the stipend for the youth under NAPS and NATS. What is this NAPS? National Apprenticeship Promotion Scheme, and NATS is your National Apprenticeship Training Scheme, correct? So there was a meeting of the Central Apprenticeship Council was held. That was the 38th edition of this meeting, and it is recommended that there should be a hike of at least 36% in the stipend that is given to the individuals who are appointed as interns through these schemes, correct? Take a note of this. Apart from this, they are suggesting that as of now 5,000 rupees to 9,000 rupees stipend is given, which should be increased to almost 6,800 starting should be there, and it can go up to 12,300 based upon the rules and the designation these or the training set they will be acquiring, correct? Next is NIBE Limited. They have secured $17.2 million export order from Israel for rocket launchers. See, globally we are seeing that there is a kind of war that is going on, right? Even we saw in India and Pakistan when Operation Sindhu took place, the Pahalgam attack that took place, that was very sad, right? So India responded with Operation Sindoor. We are seeing that in Israel it is going on, in Gaza it is going on, in Ukraine, in Russia, right? So the war is somewhere spreading. So when such situation arise, what the company do is they also want to be safe, and they also want that they should have ammunition so that they can also attack if needed on any other country. So NIBE, that is your Kavita Fabrics Private Limited, this is Pune, Maharashtra based company. They have secured a 17.52 million export order from Israel for rocket launchers. That means our country, India, somewhere will be exporting these rocket launchers to Israel, right? That means we are expanding. If you remember, we used to discuss in the last year or maybe 6 months back that India is ramping up our defense sector. We are enhancing our manufacturing in the defense sector, and we are developing more and more
arms, right? So that we can manufacture them and export them and reduce the dependence on those products from outside of the world. Correct. So Israel, from this amount has been secured. This is close to 17.52 million dollar. Next. Next is UGC approved setting up of 5 foreign university campuses in India. Here UGC is your University Grant Commission. This is a statutory body under the Ministry of Education, and they have approved 5 international recognized universities that they can set up their campuses with in India. Their aim is to make India a global education hub. This move aligns with the new National Education Policy 2020 to elevate India's education system. Correct. First is your Illinois Institute of Technology, that is located in Chicago, USA. This became the first American university that will be setting up their campus in India, right? Then second university is your University of Liverpool. It is located in Liverpool, UK, and it is expected that they will be starting their operations in India by 2026 to 2027. Then apart from this, third university is Victoria University, located in Melbourne, Australia. They will also be starting their campus by 26-27. Then comes your fourth, Western Sydney University in Australia. They will be setting up their campus in Greater Noida, Uttar Pradesh. This is your Western Sydney University. Then if we talk about UGC, who is the chairman of University Grants Commission? Vineet Joshi. Next, our Indian Army has inaugurated the first community radio station, that is Panchshul Pulse in Uttarakhand. What is the name? Panchshul Pulse, right? It is the Indian Army's first community radio station that will be operating at 88.4 FM, that is your frequently modulation. Another is your AM, that is your amplitude modulation. Correct. So coming back, FM on this 88.4 FM, this will be station, or this radio station will be live, and it will be in, this station will be set up where? In Pithoragarh, Uttar Pradesh. Correct. And this will come under Operation Sadbhavna, that will enhance the community engagement and promote regional culture. Moving on, next, Union Minister Ram Mohan Naidu has inaugurated curtain raiser event for the Wings India 2026. Right. So this is a curtain raiser event. This will be at the Asia's largest civil aviation event, that will be at Hotel Taj Palace in New Delhi. Correct. It will be organized by FICCI. Correct. And here the theme for this Wings event India 2026 was announced as Indian Aviation Paving the Future from Design to Development, Manufacturing to Maintenance, Inclusivity to Innovation, and Safety to Sustainability. Next is international affairs. Our country India participated in the 9th BRICS Industry Ministers meeting that was held in Brazil. We discussed this day before or yesterday only, right? The theme for this event was strengthening global South cooperation for more inclusive and sustainable governance, and this was the 9th edition of this Industry Ministers BRICS meeting. Correct. During this, BRICS members have adopted the joint declaration and has affirmed their collective commitment for fostering an open, fair, and resilient international environment for trade. Right. Also, BRICS Startup Knowledge Hub will also be established. Right. A formal presentation was launched here, and it is expected that we will be seeing it soon. Next is banking and finance. KMBL, that is your Kotak Mahindra Bank Limited. They have introduced a new chapter, right, for Kotak 811 digital platform. Right. It is a campaign that celebrates seamless, intuitive, and full service experience for their customers. So just remember, a new chapter for Kotak 811 digital platform has been introduced. Next is economy and business. Indian Army's AM Green, Netherlands Port of Rotterdam, they have partnered for $1 billion green energy deal. So Hyderabad, Telangana based AM Green and Greenco Group, they have signed basically a memorandum of understanding, right? And this memorandum of understanding has been signed with Port of Rotterdam Authority in Netherlands, right? And here $1 billion deal has been signed that will be promoting green energy, right? And we know that this is the future. We are seeing hydrogen based vehicles also coming into the market, right? The future is interesting, students. With this rise in AI, we will be seeing a future which will be more autonomous ahead.
Next is awards and recognition. We are talking about the 78th Cannes Film Festival, and here Iranian filmmaker Jafar Panahi has won the Palme d'Or. Indian film Homebound was recognized here. I repeat, this was the 78th edition of the Cannes International Film Festival held from 13th to 14th of May. It was held where in Cannes, France, right? And Iranian filmmaker Jafar Panahi was awarded with the festival's highest honor, with the festival's highest honor, that is Palme d'Or, right? This is for his drama film, that is It Was Just an Accident. Movie film, that is It Was Just an Accident. Correct? Take a note of this. Apart from this, Norwegian filmmaker Joachim Trier was honored with the Grand Prix for the Sentimental Value, that is a family drama exploring complexity of reconciliations. Then second, Iraqi filmmaker Hassan Hadi made history as the first from Iraq to win this award, that is the President's Cake, a childhood drama set up economic conditions. Right? For this, he awarded with this award. Moving on, here you can see the rest that we just discussed. Palme d'Or for It Was Just an Accident to Jafar Panahi, Grand Prix for Joachim Trier, Jury Prize for Oliver Lexie, Masacha, and director, and so on. Next, Sumit Tapo awarded with the Companion of the Order of Fiji for humanitarian and musical contribution. Take a note of this. This is important, students, right? So Sumit Tapo, he was ordered with the Companion of the Order of Fiji. This is the highest civilian honor in Fiji, and it was presented by their president. Correct? This award is equivalent to India's Bharat Ratna, right? And this was given to him for his contribution in the field of music and humanitarian efforts. Next is apart from this, in 2020 Fiji Presidential Medal, in 2021 Pravasi Bharatiya Samman, then World Book of Records London recognized for COVID-19 service, Youth Icon of Fiji, International Society for Krishna Consciousness, that is ISKCON India Bhakti Kala Kshetra Award also. Moving on, Olympic champion Neeraj Chopra became brand ambassador of Audi, right? For Audi India, who became the brand ambassador? Neeraj Chopra, right? Neeraj Chopra, he is associated with javelin throw, correct? And take a note of this. Apart from this, Karnataka Soaps and Detergents Limited, the state-owned manufacturer of the iconic Mysore Sandal soap, appointed Bollywood actress Tamanna Bhatia as their brand ambassador for a 2-year contract for worth 6.2 crore rupees. If we talk about Audi India, who head of operations is Balbir Singh Dhillon, headquartered in Mumbai, Maharashtra. Next is science and technology. Bengaluru-based ADTL has delivered the indigenous Surya VHF radar to IAF. I repeat, Bengaluru, Karnataka based Alpha Designs Technologies Private Limited, they had delivered the first of 6 indigenously developed Surya VHF, very high frequency radar system. As you can see in the picture, this is a radar system. This is Surya by the name, and it is a very high frequency radar system. It was delivered to Indian Air Force, and this is a part of a 200 crore rupees contract that has to be completed, or that was signed in March 2025. The detection range of these radars are 360 kilometers, and in an altitude height they can cover 15 kilometers. Next is Indrajal has launched AI-powered anti-drone solution, that is Indrajal Infra, to protect India's critical infrastructure. Right? It has been designed to secure nuclear power plants, power grids, oil refineries, ports and airports against the rogue drone attacks. Also, Indrajal Infra, it was built on the SkyOS platform, and it uses AI-driven threat detection along with sensors, spoofers, jammers to cover the airspace up to 400 square kilometers of area. Correct? And Indrajal Infra was first operational at the naval port in Gujarat, right? And it is an AI-powered anti-drone solution. Next is related to sports. Malaysia Masters 25 was held, and China's Li Shifeng has clinched the men's single title, and India's Kidambi Shriknath finished as the runner-up here, as you can see here, right? Take a note of this, right? Then moving on, Neeraj Chopra has won the silver at the Zanuski Kusosinski Memorial 2025 that was held in Poland, and we just saw Neeraj Chopra appointed as the brand ambassador for Audi India. Next,
is books and authors. Australian cricketer captain Patrick Cummins has released a new book that is Tested the Remarkable Power of Resolve. This is the new book that has been launched by him, and this book is basically talking about leadership and decision making, correct, through various discussions. And this book will be published by HarperCollins Publishers LLC, that is a British American publishing company. Moving on, next students, we are talking about Kozhikode, right? Kozhikode has declared official flower, bird, butterfly, or district butterfly and district tree, right? If we look at them here, you can see the initiative was led by Trivandrum Kerala State Biodiversity Board, and here you can see the district flower is Athirani, district bird is Maniponnam, that is your kingfisher part only, from kingfisher family, that is Maniponnam. Then district butterfly Malabar rose, and district tree is Ayakam, right? Take a note of this. So these were your all current affairs students for the day. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Who was recently conferred with the UK the Most Excellence Order of the British Empire under the King Charles III reign for his service to UK India business regulations or relations. So who was honored here? Natarajan Chandrasekharan was here conferred with the UK the Most Excellent Order of the British Empire under the King Charles III reign for his service to UK India business relations. Next, in Feb, RBI has approved the appointment of Prabhadev Singh as the Chief Executive Officer of Dash, effective from 1st of April, succeeding Zareen Daruwala. So, RBI, they approved the appointment of Prabhadev Singh as the Chief Executive Officer of Standard Chartered Bank, right? That is in Mumbai, Maharashtra, and he will be starting his office from 1st of April 2025. And he will be succeeding whom? Zareen Daruwala. Next, which organization partnered with the Aeronautical Development Agency to develop high strength, high toughness, special grade steel for aerospace applications? It is Mishra Dhatu Nigam Limited. Correct. And this collaboration will enhance the aeronautical application, particularly in the 5th generation of aircraft. Next, when will the inaugural Olympic esports game take place in Riyadh, Saudi Arabia, as announced by the International Olympic Committee on 11th of Feb 2025. So these Olympic esport games, right, they will be held in Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Arabia, and it will be in the year 2027. And this will be the first edition, that where will be the inaugural edition or the first edition of the Olympic esports going to take place. It will be in 2027 in Riyadh, Saudi Arabia. Next, India has participated in the DASH session of the Commission for Social Development from 10 to 14th of Feb with the aim of discussing global social resilience and strengthening solidarity. So, India has participated in the 63rd session of the Commission for Social Development from 10 to 14th of Feb 2025. Next, who has been appointed as the chairperson of the 31-member select committee of Member of Parliament formed by Lok Sabha Speaker Om Birla to examine the new income tax bill. So this committee is established to examine this new income tax bill. It is a 31-member committee and it will be chaired by Bhaijant Panda. Next, Indian Navy participated in the International Fleet Review 2025 and the 5th edition of Multilateral Naval Exercise Komodo from 15 to 22nd of Feb. Name the country that hosts both these exercises. So these countries or these exercises, they were hosted by Bali, Indonesia. And from this Indian side, INS Shardul took part in this along with P-8I long-range maritime surveillance aircraft and landing ship Tank Large also took part in this. Next, which country is set to host the BRICS Summit 2025 scheduled from 6th to 7th of July 2025? It is your Brazil that will be hosting it in Rio de Janeiro. Next, when the SEBI new disclosure rule for the related party transaction come into effect from? It will be coming into effect from 31st of April 2025, right? And also remember, it is SEBI that has introduced this new industry standards under which the listed entities, they are required to provide a minimum information to the audit committee and the shareholders while seeking approval for the related party transaction. Next, find the incorrect statement according to the International Energy Agency's data for Feb 2025. If we look at the options here, only option B is wrong, A is right and C is right. B is saying that solar power is projected to rise over 20% between 2025 to 2027. Is it correct? So no. The target here is, it is expected, the solar energy, it is expected to grow
between 28% between 2025 to 2027. Next, name the company that recently entered into a $1 billion agreement with International Critical Care Air Transport Team to provide 788 electric vehicle takeoff and landing air ambulances. So which is that company? It is E-Plane company. This E-Plane company, it is an electric aircraft startup that was incubated by IIT Madras, right? And they have recently entered into a $1 billion agreement with this ICATT, that is International Critical Care Air Transport Team, that will be providing 788 electric vehicle takeoff and landing, electric vertical takeoff and landing air ambulances. Vertical means on the land they can directly take off and land respectively vertically. Next is who was appointed as the 26th Chief Election Commissioner of India, succeeding Rajiv Kumar and set to assume the charge on 19th of Feb 2025. So Ganesh Kumar, correct? So Election Commissioner Ganesh Kumar was appointed as the 26th Chief Election Commissioner by Prime Minister Narendra Modi led selection committee, and he will be succeeding Rajiv Kumar, and he will become the first CEC to be appointed under the newly established law governing selection of election commission members. Next is identify the organization that developed the tested India's 4th generation deep ocean submersible Matsya 6000 under Samudryan project. So it is National Institute of Ocean Technology, right? They have developed and tested this Matsya 6000. Next, which of the following statements are correct regarding the 38th edition of the National Games? If we look at the options, option A and option C are right, B is wrong. B is saying that Maharashtra secured the top position with a total of 121 medals, including 68 medals gold, 26 silver and 27 bronze medal. Is it correct? So remember, Maharashtra secured the second position here with a total of 201 medals here. Correct? Out of which 54 were gold, 71 silver and 76 bronze. Right? Take a note of it. Next, identify the Indian athlete who recently set a new national record in the men's 3000 indoor race at the BU David Hemmerby Valentine Invitational 2025. So, Gulveer Singh here. Next, which of the following are incorrect regarding the 9-year anniversary of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? If we look at the options, which of the following are incorrect here? So, among the following, option B is only incorrect, right? Rest all are correct. B saying Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has recently extended the financial year 26-27 with budget allocation of 69,515 crore rupees. So is it correct? So remember, it has not been extended till FY27, but it has been extended till 25-26, that is FY26, and with this budget it has been extended. Next, what is the maximum loan amount facilitated under the Mutual Credit Guarantee Scheme for MSME launched by Union Minister of Finance Nirmala Sitharaman in Feb 2025? So what is the maximum loan amount facilitated here? It is 100 crore rupees. Next is in Feb, 5th International Conference on Green Metro Systems, the Future of Urban Mobility, jointly organized by DMRC, Delhi Metro Rail Corporation, and CII, Confederation of Indian Industry, and Indian Green Building Council in India. Question asked here is, identify the first of its kind initiative that was inaugurated during this event at Okhla Vihar Metro Station to promote sustainable metro rail operation. So what was established there? Which mission was or initiative was launched? It is vertical bifacial solar plants were launched here. Next, name the initiative launched by the Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan in Feb 2025 to modernize the land records in 125 urban local bodies across India. What is that initiative? National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitations. Next, according to the Future Brand Index 2024 released in Feb, which of the following is not among the top 5 spots here? Among the following, it is Disney that is not among the top 5 spots here. Rest are the among the top 5. Next, here Apple was ranked first. Remember this. This is important. Next, identify the digital service platform launched by LIC in Feb 2025 to empower its agents and sales associates. It is One Man Office, right? So, what is the digital service platform? One Man Office. It is launched by LIC. Next, who won the BBC Indian Sports Women of the Year Award 2025 at the 5th edition of the British Broadcasting Corporation Indian Sportsman of the Year Awards held in Feb 2025. So who won the BBC Indian Sports Women of the Year Award?
Manu Bakar. Right? Take a note of this. Next is, what is the name of the Asia's life-sized animatronic elephant that introduced by the people for the ethical treatment of animal in Bengaluru on 11th of Feb. So what is the name of that Asia's first life-sized animatronic elephant that was introduced by PETA India in Bengaluru, Karnataka? It is Ellie. It is Ellie. Next, where was the recent faunal survey conducted which recorded 15 new species including birds and butterflies? It is Parabiculum Tiger Reserve, right? This Parabiculum Tiger Reserve, it is in Palakkad, right? And here, remember, this faunal survey was conducted and 15 new species including of birds and butterflies were discovered here. Next is, identify the key mineral highlighted in the Memorandum of Understanding between India and Argentina signed in Feb 2025 for exploration and mining cooperation. So what were the key minerals? It is lithium here, right? Very important, students, and we have discussed this in multiple times for revision in revision part also, that between India and Argentina MOU has been signed for exploration and mining of lithium. Next, which state recorded the highest number of bird species, that is 543 in India during the 28th annual Great Backyard Bird Count Festival held in Feb 2025. So which state recorded the maximum bird counts? That is West Bengal, with 543 species were discovered here. And this was the 28th edition of this annual Great Backyard Bird Count Festival. Next, name the country that became the newest member of OPEC Plus in Feb 2025. Which is it? It is Brazil. Brazil has recently become the new member of OPEC Plus. Also, Brazil is having the presidency for BRICS. Next, name the new payment mechanism introduced by IRDAI in Feb 2025, allowing one-time mandate on UPI for insurance companies. It is Bima application supported by blocked account. This initiative will intends to simplify the payment procedure for life and health insurance policies, where it will allow the policyholders to block funds in their bank accounts for premium payments in future. Next, which of the following is not in the top 5 of the Forbes India top 10 richest women in the world 2025 list released as of Feb 2025? Among the following, Savitri Devi Jindal is not in the list. Rest all are in this list. Let's start with homework question. First question is, tell me IBM and TCS, they have partnered with Andhra Pradesh, or I have given the answer only. IBM partnered with TCS and Andhra Pradesh government to establish the India's largest quantum technology hub, right? Take a note of this. Then where other GCCs are being implemented, you tell me this, right? Locations where these GCC and what is a GCC will be implemented. Second question, tell me who will be hosting the 2031 Women's World Cup, right? Then third question, tell me recently who are the two famous Indian cricketers who have announced their retirement from Test cricket. Fourth question, when do we observe National Technology Day and the theme of this day? Fifth question, tell me when do we observe National Dengue Day, and if there is a theme, tell me that also. So these are your important questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 28 मई के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है हम सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखा करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा भी लॉन्च किया गया। देन हम बात करेंगे नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई है मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। भारत फॉरकास्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे, एंड ईपीएफओ ने जो इंटरेस्ट रेट रखा गया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स पर, वो कितना है वो डिस्कस करेंगे फॉर FY25। ऑल दीज न्यूज़ एंड इसके अलावा काफ़ी और न्यूज़ रहेंगे आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव, नेबर सभी के साथ, एंड उनको बताओ हमारे इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily
weekly, monthly content on regular basis, use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल। ये एम्पावर करेगा ग्रास रूट गवर्नेंस को। देखो पंचायती राज में क्या होता है बेसिकली, राइट, आपकी गवर्नेंस को ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसी गवर्नेंस चल रही है, क्या इक्वेलिटी मेंटेन हो रही है, क्या फ्रेमवर्क वहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, फिर अगर वहाँ पे इकोनॉमी है तो कैसी डेवलप हो रही है, राइट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, सोशल गवर्नेंस वहाँ पर कैसी है, इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, राइट। एंड पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया FY24 के दौरान। कहाँ पर इसका जो इवेंट हुआ था वो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसी के अंदर हम देखेंगे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर 2.5 लाख ग्राम पंचायत को अक्रॉस 9 थीम्स यहाँ पे अलाइन किया जाएगा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अगर हम बात करें 2.0 जो पोर्टल है, इसमें जो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं उसको जो आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.0 है उसके कंपैरिजन में देखो तो काफ़ी गिरावट हुई है। पहले 516 इंडिकेटर्स थे जो करके 147 इंडिकेटर्स तक रह गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नीति आयोग की रिपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई इनके द्वारा, डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। बेसिकली कि कैसे हमें इनको ग्रोथ लाना है, राइट, कैसे हमें जो एंटरप्राइजेज हैं, राइट, उनका पोटेंशियल हमें देखना है, कहाँ पर वो ग्रो कर सकते हैं, क्या उनकी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है, करेक्ट, एंड कैसे हम इंडिया की इकोनॉमी को फ्यूल कर सकते हैं टू ग्रो। अगर यहीं पे देखें तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी जी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया के MSME सेक्टर की बात करें तो 29% जो है MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियाज GDP एंड अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, एंड ये 60% ऑफ द वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है। एंड इसी रीज़न की वजह से इंडियन सरकार MSMEs को ग्रो करना चाहती है, राइट, एंड इसीलिए बहुत सारे इनिशिएटिव फाइनेंसिंग लॉन्च करी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, राइट, इससे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप होते हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, राइट। तो यहीं पे अगर हम देखें एक और चीज़, 0.3% ऑफ द जो मीडियम एंटरप्राइज हैं ये 40% ऑफ द MSME एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। कितना छोटा नंबर है, मतलब काफ़ी डिपेंडेंट है कुछ ही 2-4 आपके MSMEs पे, जिससे ये एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो हमें इस सेक्टर को फर्दर और ग्रो करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भारत फॉरकास्ट सिस्टम। ये वर्ल्ड का पहला वेदर मॉडल है जो ऑफर करता है 6 किलोमीटर का रेजोल्यूशन, राइट। तो 6 किलोमीटर तक के जो रेडियस के अंदर जहाँ पे आपका एरिया आ गया है, यहाँ पर ये भारत फॉरकास्ट सिस्टम आपको बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकता है अबाउट द वेदर फॉरकास्ट, राइट, काफ़ी एक्यूरेटली यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, ईच विलेज यहाँ पे कवर हो सकती है। एक विलेज में लगा दो, पूरी विलेज का तक का आपका कवर हो जाएगा कि आने वाले टाइम में हमें क्या यहाँ पर वेदर देखने को मिल सकता है, किस टाइम बारिश होगी, किस टाइम ज़्यादा धूप होगी, किस टाइम बादल होंगे, राइट। इससे क्या होगा, फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा फसल को ग्रो करने के लिए। इवन कहीं ना कहीं देखें स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है, या फिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि मान लो बारिश हो रही है तो काफ़ी बड़े टाइम तक फिर वहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। इवन नॉर्थ इंडिया में देखें तो पॉल्यूशन के टाइम पे ग्रैप लग जाता है, उसके लगने से क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो उससे भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी डिले होता है एंड हमारे इकोनॉमी पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 8.25% का इंटरेस्ट रेट रिटेन किया ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड फॉर FY25। ये EPFO अकाउंट क्या होता है, बेसिकली कोई एम्प्लॉई है, राइट, वो PF कटवा रहा है, तो जितना वो PF कटवाएगा उतना ही उनकी कंपनी को यहाँ पे सेम अमाउंट का PF देना पड़ेगा, राइट। एंड ये जो टोटल अमाउंट इकट्ठा होगा ये एक UAN अकाउंट नंबर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, एंड उस इकट्ठे हुए पैसे पे सरकार अलग से 8.25% यहाँ पे इंटरेस्ट देती है साल का। तो पूछा गया FY25 के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना था इस बार, 8.25% का। नेक्स्ट आ जाते हैं, 38th एडिशन ऑफ CAC मीटिंग देखने को मिली, जिन्होंने रिकमेंड किया 36% का हाइक इन द स्टाइफंड फॉर द यूथ अंडर द अप्रेंटिसशिप स्कीम, राइट, जो कि आपकी है NAPS एंड NATS।
NAPS क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, एंड NATS है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो इनके अंडर 36% का यहाँ पे स्टाइफंड में हाइक की बात की गई 38वें सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल मीटिंग के दौरान। ठीक है, जहाँ पे बोला गया कि जो इनका स्टाइफंड 5,000 से लेकर 9,000 के बीच में होता था उसको बढ़ाकर अब 6,800 से 12,300 तक कर दिया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं NIBE नाइब। इन्होंने सिक्योर किया $17.52 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर इजराइल से रॉकेट लॉन्चर्स के लिए। देखो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, लड़ाई चल रही है, तो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस प्रोडक्शन है वो बढ़ती हुई हमें दिखेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई दिखेगी। एंड इंडिया मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ की बात चाहता है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाहता है इन हाउस ही, ताकि बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इंपोर्ट हमें ना करना पड़े, बल्कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट हो रहा है फिलीपींस में, सिमिलरली इजराइल से हमें एक ऑर्डर मिला है $17.52 मिलियन का कि हमें रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पे इजराइल को एक्सपोर्ट करने हैं बना के। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है एंड काफ़ी बोल्ड स्टेप है ये इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट में, जहाँ पर हम आर्म्स को एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने अप्रूव किया 5 फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस को सेटअप करने के लिए इंडिया में। इससे क्या होगा, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में सेटअप होंगी तो बाहर के बच्चे यहाँ पे एनरोल हो सकेंगे। इससे क्या होगा, इंडिया में एक कल्चर बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट। एंड बाहर से लोग आएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ हमें दिखेगा कि बाहर के लोग यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं। एंड ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर अलाइन रहेगा। इससे इंडिया के एकेडमिक सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा, करेक्ट। एंड इंडिया को हम एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाते हुए देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने अप्रूव किया 5 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में कि वो अपना कैंपस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहली है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि शिकागो में है इन USA। ये वो पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी भी नहीं जो इंडिया में अपना कैंपस सेटअप कर रही है। फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, जो कि UK में है, 2026-27 तक ये अपना ऑपरेशन यहाँ स्टार्ट कर देंगे। तीसरी यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की, ये भी 26-27 तक अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। एंड वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी चौथी आ जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है एंड ये यूपी में ग्रेटर नोएडा में अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहीं पे एक और चीज स्टूडेंट्स, UGC की। UGC को यहाँ पे चेयरमैन कौन रहेंगे UGC के, विनीत जोशी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स, कहाँ पर, उत्तराखंड में, राइट। 88.4 FM फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करेगा। एंड इंडियन आर्मी का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी एंगेजमेंट के काम आएगा, रीजनल कल्चर को प्रमोट करने के ये काम आएगा, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। देन ये इस्टेब्लिश कहाँ किया गया है, पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। इसके बाद आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, इन्होंने इनॉग्रेट किया कर्टेन रेजर इवेंट फॉर विंग्स इंडिया 2026। ये विंग्स इंडिया की एक थीम याद रखेंगे, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेटिव एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी। ये थीम है जिसके अंडर ये विंग्स इंडिया हुआ, राइट। यहाँ पे विंग्स इंडिया की अगर हम बात करें तो कैसे हम यहाँ पे एविएशन सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है जो कि ताज होटल में देखने को मिला इन न्यू दिल्ली। एंड यहाँ पे फिकी के द्वारा यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। मूविंग ऑन, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 9वें ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग में, जो कि ब्राज़ील में हुई थी अभी, जो हमें देखने को मिली। इसके बारे में हमने भी डिस्कस भी किया था कुछ दिन पहले। ये 9th एडिशन था। इसकी एक थीम रहेगी, थीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसकी थीम रहेगी। यहाँ पे एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी साइन किया गया है कि क्या कलेक्टिव एफर्ट्स रहने चाहिए ताकि हम मिलजुल कर यहाँ पे ग्रो कर सकें। मूविंग ऑन, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आते हैं स्टूडेंट्स। मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया ऑफ देयर फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कोटक 811। बेटर सर्विसेज रहेंगी, एक्सपीरियंस बेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा टू द कस्टमर्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। इंडिया के AM ग्रीन एंड नीदरलैंड के पोर्ट ऑफ रोटरडैम के बीच में भी एक $1 बिलियन का ग्रीन एनर्जी डील साइन हुई है, जिससे हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम होता हुआ दिखेंगे। ज़्यादा ग्रीन प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जो कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, जो कि क्लीन
एनर्जी को प्रमोट करते हुए दिखेंगे, जिससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम होगा। करेक्ट। तो हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड एम ग्रीन, बैक्ड बाय द फाउंडर्स ऑफ ग्रीन को ग्रुप, इन्होंने एमओयू साइन किया है पोर्ट ऑफ रॉटरडैम अथॉरिटी ऑफ नीदरलैंड के साथ, ताकि ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन को डेवलप किया जा सके एंड राइट, एंड इससे इंडिया का या फिर इससे जो डेवलपमेंट है वो हमें ग्रोथ होती हुई दिखेगी, स्पेसिफिकली इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर। फिर आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। हम बात करेंगे 78th एडिशन ऑफ केन्स फिल्म फेस्टिवल। ये हुआ कहाँ पर था? केन्स, फ्रांस में, राइट। एंड ईरानियन फिल्म मेकर जाफर पनाही, इन्होंने पामे डियोर जीत लिया है ये अवार्ड को। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। जाफर पनाही ये एक ईरानियन फिल्म मेकर है, राइट। इनको फेस्टिवल का जो हाईएस्ट ऑनर है उससे सम्मानित किया गया है यहाँ पे, जो कि है पामे डियोर, राइट। इनकी ड्रामा फिल्म रहेगी, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ड्रामा फिल्म क्या है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये यहाँ पे इस फिल्म के लिए, इस ड्रामा फिल्म के लिए यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया, राइट। एंड ये 78th एडिशन है, ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा देखें तो जॉकिम ट्रायर, इनको भी ग्रैंड प्रिक्स से सम्मानित किया गया, बल्कि आप यहाँ देखिए पामा डियोर, जाफर पनाही, ग्रैंड प्रिक्स, जॉशिन टाइनर, राइट। सिमिलरली जूरी प्राइज एंड बेस्ट डायरेक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन फॉर किनको सम्मानित किया गया? सुमित टापो को सम्मानित किया गया, इनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक इंडस्ट्री में, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, राइट। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से, ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, राइट। इंडिया में जो हमारा भारत रत्न होता है उसके इक्विवेलेंट आप इसको मान सकते हैं, राइट। एंड इससे पहले हम देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पे सम्मानित किया जा चुका है। एंड अभी रिसेंटली श्री मधुसूदन साई जी को भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, इनके अलावा इनको फिजी प्रेसिडेंशियल मेडल 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये एक एथलीट है जो कि जेवलिन थ्रो इवेंट से बिलोंग करते हैं, राइट। गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड काफ़ी फेमस हो चुके हैं ये, करेक्ट। हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। एंड नीरज चोपड़ा को अभी ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, सो टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा अगर हम देखें तो कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने, इन्होंने तमन्ना भाटिया को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया 6.2 करोड़ के लिए फॉर 2 ईयर्स। ऑडी इंडिया की बात करें तो बलबीर सिंह ढिल्लों यहाँ के हेड ऑफ ऑपरेशंस रहेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे। बेंगलुरु बेस्ड ADTL, इन्होंने डिलीवर किया इंडिजीनियस सूर्य VHF रडार को टू द इंडियन एयरफोर्स। VFH क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार रहेंगे, जिसका नाम रहेगा सूर्या। इंडियन एयरफोर्स को ये डिलीवर किए गए हैं अल्फा डिजाइंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है एंड फर्स्ट ऑफ द 6 ये रडार्स ये जो रडार सिस्टम है इनको डिलीवर किए गए। 200 करोड़ की लागत से इनको कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था मार्च 2025 में। एंड 360 किलोमीटर की यहाँ पे इनकी रेंज रहेंगी हॉरिजॉन्टली। एंड वर्टिकली अगर हम देखें कि ऊपर तक आपके जो ऑल्टीट्यूड है वहाँ तक कितना डिटेक्ट करेगा? 15 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर इंद्रजाल पर। इन्होंने इंद्रजाल लॉन्च्ड AI पावर्ड एंटी ड्रोन सॉल्यूशन लॉन्च किया गया, जो कि है इंद्रजाल इंफ्रा, राइट। इंद्रजाल की अगर मैं बात करूँ, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड एक ऑटोनोमस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है इंद्रजाल। ये एक AI पावर्ड सॉल्यूशन इन्होंने लॉन्च किया है, करेक्ट, ताकि जो एंटी ड्रोन सॉल्यूशन बना सके। मतलब अगर ड्रोन्स आ रहे हैं तो उनको कैसे, बहुत सारे ड्रोन्स आ रहे हैं तो कैसे उनको कंट्रोल करना है, नष्ट करना है, उनको जैम करना है, या कैसे क्या करना है, राइट। तो इंद्रजाल इंफ्रा ये SkyOS प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ये AI ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है विद सेंसर्स, स्पूफर्स, जैमर्स, राइट। एंड इट कवर्स अप टू 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ताकि सेफ रह सके उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई ड्रोन अटैक ना हो सके, UAV अटैक ना हो सके। सिमिलर काइंड ऑफ का इंफ्रास्ट्रक्चर या इंद्रजाल इंफ्रा ये स्टैब्लिश किया गया था नेवल पोर्ट में इन गुजरात में, ताकि वहाँ पे जो भी पाकिस्तान के टाइम पे एस्केलेशन हुआ था उसको रोका जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स। मलेशिया मास्टर्स 2025 की बात करें तो चाइना के ली शेफिंग, इन्होंने अभी मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। एंड इंडिया के किदाम्बी श्रीकनाथ, इन्होंने रनर अप यहाँ सिक्योर किया, राइट, रनर अप रहे हैं यहाँ पे, तो मार्क करेंगे इसको। ये 16th एडिशन था आपका मलेशिया मास्टर्स का। मूविंग ऑन, नीरज चोपड़ा अभी हमने देखा था ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऑडाई इंडिया के। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता भी जानुस कुसोस्की मेमोरियल के दौरान, कहाँ पर? पोलैंड में।
नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कैप्टन पैट्रिक कमिंस, राइट, इन्होंने भी एक नई बुक रिलीज की है, टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। देन इसके बाद देखेंगे अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो कोझिकोडे इन्होंने डिक्लेयर किया है अपना डिस्ट्रिक्ट फ्लावर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इमेज गलत लग गई है। कोझिकोडे के द्वारा अपना डिस्ट्रिक्ट फ्लावर यहाँ पे भी डिसाइड किया गया है, बर्ड एंड बटरफ्लाई एंड ट्री। डिस्ट्रिक्ट फ्लावर रहेगा अथिरानी, डिस्ट्रिक्ट बर्ड रहेगा मैनीपोनम एंड डिस्ट्रिक्ट बटरफ्लाई रहेगा मालाबार रोज एंड डिस्ट्रिक्ट ट्री रहेगा एयाकम। ये इनके केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया एंड ये चीज़ें डिक्लेयर की गई। एंड इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है उसके अनाउंसमेंट के दौरान यहाँ पे मेक श्योर किया गया, ये चीज़ें अनाउंस की गई। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में और बेटर रहेंगे। आ जाते हैं मेंशन दैट कंट्रीज जिन्होंने रिसेंटली सिक्योर किया $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एक्सिम बैंक ताकि परचेज कर सकें हाई स्पीड बोट्स एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को। तो वियतनाम को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, राइट, एक्सिम बैंक के द्वारा ये लाइन ऑफ क्रेडिट ओपन की गई है। कितने की? $300 मिलियन की ये लाइन ऑफ क्रेडिट रहेगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे दो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, एक है 180 करोड़ रुपए का, 120 करोड़ रुपए का। 180 करोड़ रुपए से आप यहाँ पे वियतनाम परचेज करेगा 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एंड 120 करोड़ रुपए से यहाँ पे हाई स्पीड गार्ड बोट्स को यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा। नेक्स्ट 7वां एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड 2024 की बात करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? यहाँ पे आपका सारे ऑप्शन ठीक है, सिर्फ बी ऑप्शन गलत है। बी कह रहा है कि दिव्या देशमुख ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल एंड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 बनी। क्या ये सही है? नहीं, ये नहीं। कौन होंगी इनकी जगह? मनु बाकर, मनु बाकर, राइट। नेक्स्ट, अभी फरवरी में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया किस इंडियन स्टेट पे? मणिपुर में। कब? जब जिन्होंने इनके चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। यहाँ पे अब कौन रूल करेगा? गवर्नर का रूल चलेगा, चलेंगे प्रेसिडेंट का ही रूल, बट वहाँ पे प्रेसिडेंट को या फिर प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होगा स्टेट में? गवर्नर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द तेलंगाना गवर्नमेंट टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड अदर की सेक्टर्स। तो किन्होंने भी पार्टनर किया तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ? गूगल ने पार्टनर किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बताना है करेक्ट इनमें से कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू 15वां एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला होम ग्रोन वर्टिक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार एंड जो क्रिएट एंड डिटेक्ट करेगा 6th and 5th जनरेशन के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, उनको डिटेक्ट करेगा। तो क्या ये हॉल के द्वारा बनाया गया है? नहीं, ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस डिजीज़ को नाम बताओ जिसको टारगेट किया जाएगा फॉर एलिमिनेशन बाय लॉन्चिंग एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा जी के द्वारा। तो वो है लिम्फेटिक फ्लेरोसिस एंड 2027 यहाँ पे टारगेटेड ईयर रखा गया कि हम इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कमेमोरेटिव कॉइन जो कि इशू किया गया ऑन द बर्थ सैनिटरी ऑफ लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मोहम्मद राफ़ी एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025 फरवरी में। तो क्या डिनोमिनेशन है? 100 रुपीज़ का वो कॉइन रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव जिसको इंट्रोड्यूस किया गया IRDAI के द्वारा ड्यूरिंग द 9th एडिशन ऑफ बीमा मंथन टू एनहेंस असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो वो बीमा ट्रिनिटी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किन को अभी कन्फर किया गया यूके के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से अंडर द किंग चार्ल्स III रेन फॉर हिज सर्विस टू UK इंडिया बिजनेस रिलेशनशिप। तो नटराजन चंद्रशेखरन जी को यहाँ पे अभी कन्फर किया गया इस अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रभदेव सिंह एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डैश इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल सक्सीडिंग जारिन दारूवाला। तो किन को अभी कन्फर किया गया? वो हैं, या फिर RBI ने किन को अपॉइंट किया गया? प्रभदेव सिंह को क्या अपॉइंट किया गया? CEO अपॉइंट किया गया। और कहाँ का अपॉइंट किया गया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का अपॉइंट किया गया। ये किन को सक्सीड करेंगे? जारिन दारूवाला को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ टू डेवलप हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस स्पेशल ग्रेड स्टील MDN 100 को फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री में ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया जाएगा? रियाद सऊदी अरेबिया में। कब होस्ट किया जाएगा? 2027 में होस्ट किया जाएगा। पहला एडिशन होगा या फिर हम बोले इनॉग्रल एडिशन।
Next, India has participated in the DAS session of the Commission for Social Development from 10 to 14th of Feb with the aim of discussing global social resilience and strengthening solidarity. तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया कौन से सेशन में, राइट? ये कौन सा सेशन था? ये था 63rd सेशन. नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ 31 मेंबर सेलेक्ट कमेटी, राइट, जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी टू एग्जामिन न्यू इनकम टैक्स बिल. तो बैजयंत पांडा को यहाँ पे अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन है. नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में एंड 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो में, राइट, जो कि 15 से 22 फरवरी तक हुई. पूछा जा रहा है किस कंट्री ने होस्ट कराया इस दोनों एक्सरसाइज को? तो बाली इंडोनेशिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था. ये थी होस्ट कंट्री. यहीं पे याद रखेंगे, इंडियन नेवल शिप एक का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था हमें. कौन सा था? वो है INS शार्दुल का पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट, किस कंट्री सेटअप करेगी ब्रिक्स समिट 2025 को या होस्ट करेगी? ब्राज़ील होस्ट करेगी, राइट, एंड ब्राज़ील ही OPEC प्लस का भी मेंबर बन गया है अब. नेक्स्ट, व्हेन विल सेबी अप्रूव या फिर व्हेन विल सेबीज न्यू डिस्क्लोजर रूल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कम इनटू इफेक्ट? ये कब से लागू हो जाएगा? ये आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज डाटा. इसमें से अगर हम डाटा देखें, A भी सही है, C भी सही है, B गलत है. B कह रहा है कि जो सोलर पावर है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू राइज ओवर नॉट 20% बाय बट 28% से बढ़ेगी 2025 से 2027 के बीच. नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने एंटर किया एक $1 बिलियन का अग्रीमेंट विद इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम टू प्रोवाइड 788 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर एम्बुलेंसेज को. तो उस कंपनी का नाम बताओ. वो है E-प्लेन कंपनी. ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट स्टार्टअप कंपनी है, इंक्यूबेटेड बाय IIT मद्रास, एंड यहाँ पे एयर एम्बुलेंस का ये काम करेगी. नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि राजीव कुमार को सक्सीड करेंगे. वो है गणेश कुमार. नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डेवलप किया, टेस्ट किया इंडिया के 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट. तो किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, टेस्ट किया गया है मत्स्य 6000 को. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स. तो यहाँ पे अगर हम देखें 38वें नेशनल गेम्स के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C सही है, B यहाँ पे गलत आ जाता है. महाराष्ट्र की टॉप पोजीशन नहीं आई, महाराष्ट्र 2nd पोजीशन पे था इन दिस मेडल टैली है, राइट. एंड 121 नहीं 201 मेडल्स थे. गोल्ड थे आपके 54, सिल्वर थे आपके 71 एंड ब्रॉन्ज थे 76. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन एथलीट जिन्होंने अभी नया नेशनल रिकॉर्ड सेटअप किया इन द मेंस 3000 इंडोर रेस एट द BU डेविड हेनरी वैलेंटाइन इन्विटेशनल 2025 के दौरान. तो वो है गुलवीर सिंह. Let's start with homework question. First question is, tell me IBM and TCS, they have partnered with Andhra Pradesh, or I have given the answer only. IBM partnered with TCS and Andhra Pradesh government to establish the India's largest quantum technology hub. Right? Take a note of this. Then where other GCCs are being implemented, you tell me this. Right? Locations where these GCC and what is a GCC will be implemented. Second question, tell me who will be hosting the 2031 Women's World Cup. Right? Then third question, tell me recently who are the two famous Indian cricketers who have announced their retirement from Test cricket. Fourth question, when do we observe National Technology Day and the theme of this day. Fifth question, tell me when do we observe National Dengue Day, and if there is a theme, tell me that also. So these are your important questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.